इसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। डमी एंड फ्री इंडिसेस। अच्छा, इसे बल्कि मजीद करें, मतलब डॉट प्रोडक्ट का एक पार्ट जो है वो कोवेलेंट है, ठीक है, जिसको आप कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ले रहे हो, ठीक है, ठीक है, उसमें ट्रांसपोज नहीं शामिल, ठीक है, ट्रांसपोज आपने अभी ऊपर ले लिया, ठीक है। और एक पार्ट जो है वो खुद जो कॉलम मैट्रिक्स है वो कंट्रावेलेंट होगा, ठीक है। ओके, क्या डिफरेंस है डमी? डमी मीन जिनसे समेशन हो, the all the variable on which the summation will be applied, that will be all variable on which all indices, ब्रैकेट में लिख लो वेरिएबल on which summation is applying, all the variable on which summation or integration is applying, if indices होगा तो उस पर summation आएगी, और अगर वेरिएबल है तो वो क्या कहलाएगा, उस पर इंटीग्रेशन आएगी। ऑल द इंडिसेस मैं बता देता हूँ, अभी एक्सप्लेन कर। ऑल द इंडिसेस ब्रैकेट मीन वेरिएबल, यानी उससे करस्पॉन्डिंग ब्रैकेट टू ब्रैकेट करस्पॉन्ड होगा, और वो ऑल द इंडिसेस ऑन विच समेशन इज अप्लाइंग इज डिफाइंड एज अ डमी इंडिस। ओके, क्लियर हो गया? और अगर वेरिएबल है तो समेशन की जगह इंटीग्रेशन होगी। कंटिन्यूस समेशन इज अ वेरिएबल रिप्लेस होती है जब भी वेरिएबल पे समेशन होती है, मतलब कंटिन्यूस चेंज है तो वो इंटीग्रेशन होती है, यू नो दैट, ठीक है। सो दैट विल बी रिप्लेस विद दी नो summation will apply। इन पे कोई समेशन, कोई इंटीग्रेशन नहीं है। एग्जांपल देख लें, here अल्फा आ रहा, इंडिसेस है, और इन पे अल्फा ए पे क्या ये आई जो है ये क्या है, इंडिसेस, ठीक है। इंडिसेस ओके, हमने दोबारा से मैं एक दफा रिपीट कर देता हूं, साई और फाई को लिया तो इंटीग्रेशन कंटिन्यूस के लिए हमारे पास क्या आया था, इसके ऊपर कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट आया था और इसके ऊपर ये आया था। इंटीग्रेशन किसके रिस्पेक्ट हो रही थी, अल्फा वेरिएबल, और यहाँ समेशन किस पे हो रही है, आई पे या ए पे। ओके, अगर किसी इंडिसेस पे समेशन आती है, ठीक है, या किसी वेरिएबल पे अगर इंटीग्रेशन कंटिन्यूस की फॉर्म है तो दैट विल बी डिफाइंड एज अ डमी इंडिसेस और डमी वेरिएबल। अगर इंडिसेस है तो डमी इंडिसेस,
और अगर वेरिएबल है तो डमी वेरिएबल। और जिन पे समेशन नहीं अप्लाई हो रही होगी वो डमी नहीं होंगे, फ्री होंगे। ठीक है, मिसाल के तौर पे यहाँ एक एग्जांपल ले लेते हैं, चलो इधर ही ले लेते हैं। डी एफ म्यू इज इक्वल टू, ऐसे ही है ना, एक मिनट प्लीज, डी एफ म्यू मैंने किसके बराबर लिखा, पार्शियल एफ म्यू, एक मिनट बेटा, पार्शियल एक्स अल्फा, सॉरी अल्फा आई डी अल्फा आई। तो ये जो चीज है, these will be dummy indices, or this will be a, yes, this will be a free variable, a free indices. Okay, क्लियर हो गया? Here, no, this is a dummy indices, and here is a alpha is a, जिस पे इंटीग्रेशन अप्लाई हो रही है, डमी वेरिएबल, जिस पे इंटीग्रेशन अप्लाई हो रही होती है वेरिएबल्स पे, वो डमी वेरिएबल कहलाएंगे, और जिस पे समेशन अप्लाई हो रही होगी उसे क्या कहेंगे, डमी इंडिसेस कहेंगे। ठीक है, जिस पे कुछ अप्लाई नहीं हो रहा होगा, जैसे मैंने कहा फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने कहा कि यहाँ म्यू है, दैट देयर इज नो समेशन इज अप्लाइंग ऑन दैट, दैट्स मीन दे विल बी डमी द फ्री इंडिस। ओके, गॉट इट? ये क्लियर हो गया यहाँ तक? ये पता चल गया ये डमी इंडिसेस हैं, ये डमी वेरिएबल। whenever you apply a dummy indices, dummy variable, there will be a summation or integration. Have you ever observed that these are whenever you apply an integration or a summation, result will be always independent from that indices or a variable. फॉर एग्जाम्पल अभी हम एग्जाम्पल भी करेंगे, इंटीग्रेशन, फोरियर सीरीज पढ़ी है, फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन कभी नाम सुना है, मतलब है ना? ठीक है, तो उसमें भी हम क्या करते हैं, उसमें हम क्या करते हैं, इंटीग्रेशन अप्लाई करते हैं, जिस वेरिएबल के रिस्पेक्ट हम इंटीग्रेशन अप्लाई करते हैं रिजल्ट उससे इंडिपेंडेंट होता है। तो दैट्स व्हाई। ठीक है, अभी हम उसको ज्यादा डिटेल में देखेंगे बाद में। अभी हमारा जो टॉपिक है, एक और एग्जांपल ले लेते हैं ताकि हमें ज्यादा से ज्यादा एग्जांपल्स जो हैं समझने में हेल्प करे। प्लीज, ए, मैं थोड़ी सी एग्जांपल लेना, एक मैट्रिक्स ए है, एक दूसरा मैट्रिक्स है Pn, ठीक है, ऑर्डर इनके ये है, जब इनको आप मल्टीप्लाई करते हैं, द कॉलम मस्ट बी सेम विद द रो ऑफ द फर्स्ट। ओके, so this will be equal to A, B, M, K, K, N, and K will be 1, 2, मतलब P जो उसका ऑर्डर था। ओके, सो
this k will be double. This because the summation is the k will be double, and result and these m or n will be a free indices. ओके समझ आ गई है? एंड एक एग्जांपल और ले लेते हैं. फॉर एग्जांपल P, I'm integrating, okay, simple integration. What will be the result? X will be independent from the y variable, so yes, exactly. Y4 over 4 a b limit, and that will be b4 minus a4 divided by 4. Yes, that will be answer. And the result mean whatever this answer, that is function of x only. Or okay, and you have applied the integration of yes, नया फंक्शन लिखना चाहिए. What we have observed, जिस चीज के रेस्पेक्ट हम इंटीग्रेशन लेते हैं रिजल्ट उससे इंडिपेंडेंट होता है. ये देखो ना, ये तो कांस्टेंट बन गया ना. b और a तो बाउंड्री वैल्यू है ना, b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, दैट इज कांस्टेंट, दैट इज नॉट वेरिएबल. So new answer is will be the function of the x only, that is changing with the x. Okay. Okay. Here, so x is y is dummy variable and x is free variable. So that is different. Got it? कोई difficulty? Okay. So that is the difference. सही है? नहीं, मैंने आज काफी ब्रेक दी है, प्लीज चलने दो. ठीक है, ठीक है. क्या? अच्छा, एक मिनट, ये बाद में कर लेते हैं. अभी ये तो करो ना. ये समझ आ गई? इसमें कोई मुश्किल? ओके, दैट इज द डिफरेंस बिटवीन डमी इंडिसेस एंड डमी वेरिएबल. कि डमी इंडिसेस में समेशन आती है और फ्री में समेशन नहीं आती. ये एग्जांपल नोट कर लेंगे. अच्छा, दूसरी आपने बात क्या नोट की? व्हाट इज द सेकंड थिंग? dummy indices comes twice in each term. The main indices are variable will be always come two time in a variable. I know कि अगर आप
थोड़ी सी अक्ल से काम लें तो ये आपके लिए डाइजेस्ट करना मुश्किल होना चाहिए था, लेकिन क्योंकि आप इसको इतना कम यूज़ करते हो तो इजीली डाइजेस्ट हो गया ये। वैसे आप कह सकते थे कि सर यहाँ वाई की जगह साइन वाई भी लिखा साथ हो सकता है, तो 3 वेरिएबल भी हो सकते हैं। इंडिसेस का तो समझ आता है कि डबल, जब भी डबल डमी इंडिसेस जब जितनी दफ़ा भी जब भी आपने मैंने जितनी भी एग्जांपल्स दी हैं डमी इंडिसेस कितनी दफ़ा है? 2 दफ़ा है। अच्छा, वेरिएबल के बारे में कुछ क्वेश्चन आता है, ठीक है, मतलब मिसाल फॉर एग्जाम्पल I may write as a sin y dy. Here y is a dummy variable, but it is coming thrice in time. 3 दफा आ रहा है ना, तो आपका क्वेश्चन हो सकता है सर आपने ये बात थोड़ी सी गलत नहीं गई कि आपने कहा कि वेरिएबल इंडिसेस की तो समझ आ रही है, वो कभी भी कोई एग्जांपल ऐसी नहीं है जिसमें 3 दफा आया, 2 दफा ही आता है। लेकिन वेरिएबल के बारे में आप क्वेश्चन पूछ सकते हो कि सर इट इज नॉट लुकिंग, देयर आर मेनी एग्जांपल्स जिन पे इंटीग्रेशन अप्लाई होती है और दे कम 3 दफा, 3 टाइम्स, 4 टाइम्स, 5 टाइम्स, दैट इज नॉट नेसेसरी। असल में ये दोनों को कंबाइन करके हम ऐसे लिख सकते हैं, एक्स फंक्शन ऑफ, ये पूरा फंक्शन है ना, as a function of y dy. Actually this is the function of one variable, चाहे लॉ की फॉर्म में वैसे मतलब एक फंक्शन है ना, तो इसको हम फंक्शन की जबान में एक ही कहेंगे, सो that's why that will be defined as a one variable। नहीं, इंडिपेंडेंट होगा जिसके रिस्पेक्ट इंटीग्रेशन ना, वैसे वो ठीक है, डबल इंटीग्रेशन वो बात की बात है, अभी हम इसे बिल्कुल सिंपल लेके चलते हैं। कौन सा? मैंने यही बताया कि ये एक्चुअली मिलके एक फंक्शन बनेगा ना, तो एक टाइम आ रहा है, वही एक्सप्लेन मैंने कहा था पहले आना चाहिए था ये यार कंबाइन करके ये 3 दफा आए या 4 दफा आए, मतलब कंबाइन करके एक ही फंक्शन है ना, तो उसका नया जो आंसर आएगा दैट विल बी अ फंक्शन। ठीक है, क्लियर हो गया सबको, समझ आ गई? ठीक है, अच्छा, और कौन सी बात नोट की? एक तो समेशन, एक और बात आपने एग्जांपल में सब एग्जांपल्स में नोट की होगी, एक तो जब भी जिस पे भी डमी इंडिसेस होगा उस पे समेशन होगी, ठीक है, एंड इट विल ऑलवेज कम ट्वाइस। The third most important thing, result will have same indices, result will free from free तो जो इसकी लिमिट आई जो जीरो के पैरामीटर वो भी बदल दी है।
क्या कह रहे हो? वो अभी मेरा आप कहीं गए हुए थे, मैंने अभी की थी, जैसे कि ये x y3 dx हमने किया था, तो लिमिट अप्लाई की थी, तो जो वेरिएबल जिस पे इंटीग्रेशन अप्लाई होती है उस पे वेरिएबल पे आएगी ना लिमिट, x पे तो नहीं आएगी ना, तो रिजल्ट विल बी फंक्शन ऑफ x नॉट y, ठीक है, उससे इंडिपेंडेंट हो जाएगा, स्केलर हो जाएगा, ठीक है। और यही मैंने बात यहाँ की है, रिजल्ट विल बी फ्री फ्रॉम डमी इंडिसेस और वेरिएबल, रिजल्ट में कभी भी डमी नहीं आएगा। मिसाल के तौर पे एक तो ये इंटीग्रेशन की एग्जांपल है कि आपका जो फंक्शन था इंटीग्रेशन किस पे अप्लाई हुई थी, एक्स वाई डी वाई पे अप्लाई हुआ, ऐसे ही है, y पे अप्लाई हुआ x, x इज द फ्री इंडिसेस, तो रिजल्ट विल बी फंक्शन ऑफ x। यहाँ आपके वेरिएबल x और y हो रहे हैं, लेकिन y विल बी क्योंकि इस पे इंटीग्रेशन आ रही है, y विल बी फ्री वेरिएबल, डमी वेरिएबल, x विल बी फ्री, सो रिजल्ट विल बी डिपेंड अपॉन द फ्री इंडिसेस x एंड इंडिपेंडेंट फ्रॉम द डमी वेरिएबल y, ओके। And similarly, in this case, summation is applying on the p, okay, up till p. Result is actually the mn, because mn are a free variable. तो result हमेशा result का जो variable हो, indices हो या variable हो, they will be as same as the free, okay. Got it? Okay. And in this case of f mu, d mu, this is a result, partial f mu, partial x alpha I, d alpha I, here was a summation on I equal to 1 to n. So this I was a dummy, that's why there is a no summation is on the variable or indices. In the case of summation, there will be indices. In the case of variable, there will be a okay. Got it? You have studied. Hopefully you have studied the action. Okay, action principle in the classical mechanics. Yes. क्लासिकल मैकेनिक्स में एक्शन नहीं पढ़ा आप लोगों ने? लाइन इंटीग्रल ऑफ द लैग्रांजियन इज डिफाइंड एज एक्शन। अच्छा, नहीं, मेरा वो पढ़ाने का कोई इरादा नहीं है, ठीक है। सो मैं सिर्फ एक एग्जांपल दे रहा हूं कि एक्शन जो है वो लाइन इंटीग्रल होता है, लाइन इंटीग्रल ऑफ लैग्रांजियन a to b q t. So this is integration with the with respect to time. Okay, हमें इससे डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है क्योंकि सीएम इज नॉट अवर टॉपिक। हमारा टॉपिक है कि डमी इंडिसेस क्या है, दैट इज इंपॉर्टेंट। तो इंटीग्रेशन इज हियर इज इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू time, and the action will be must be independent from the time, because this is integration with respect to time. So action will be independent from this dummy variable. If we write it in the form of the square, that means t is a dummy variable. Dummy mean integration is applying on it, and s will be defined, action जो है this s will be the functional, जो जिस चीज से इंडिपेंडेंट होता है उसे फंक्शन नहीं कहते, फंक्शनल कहते हैं। ये डिफाइन करने का मतलब था, s will be functional
half time. Functional. So what is the difference between functional and function? So you must know the difference between the function. मैं एक इसका तो पूरा टॉपिक है फंक्शन का, लेकिन हम उसमें नहीं जाएंगे. हमारे फंक्शन में इन द केस ऑफ फंक्शन that will be depend upon. In case of functional, that will be independent from that. Okay, so that's the difference. You must be very clear. बस इतना आपके लिए जरूरी है. In case of function, will depend upon variable. In case of functional, you must know the difference. Functional. Please. In the case of functional, variable will be dummy. Is that integration will be with respect to given variable, and result will be independent. Explicitly. So that is the difference between functional and function. You must know that difference. What is the, अगर आपसे कोई पूछता है कि what is the function and what is the functional, you must know कि what is the main actually difference between the function and to be functional. Okay. Okay. Fourier transformation. Fourier transformation. हाँ जी. हम मेरी कोशिश ये होगी कि एग्जांपल्स में ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन, एग्जांपल्स भी आपको ये ना जहाँ से फिजिक्स की एग्जांपल्स हैं जो आपको फिजिक्स में ज़्यादा हेल्प हों वो हम एग्जांपल्स. फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन. फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन क्या है? आप एक एफ वेरिएबल से फंक्शन को किसी दूसरे वेरिएबल में कन्वर्ट करते हैं. ठीक है, ये वही टॉपिक चल रहा है. ठीक है, तो इसे फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं. कैसे? मिसाल के तौर पे आपको एफ अल्फा दिया हुआ है और आप इसे बीटा में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं. ठीक है, एफ बीटा में कन्वर्ट करना चाह रहे हो. ठीक है, तो फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन क्या होगा? माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी इंटीग्रेशन. ये चेंज भी हो जाती है 0 टू, अगर इन्फिनिटी, व्हाट इज इन्फिनिटी? आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन यू. ठीक है, इन्फिनिटी क्या है? इन्फिनिटी इज डिफाइंड. तो इन्फिनिटी किसे कहते हैं? मैंने बताया था आउट ऑफ रेंज. जहां रेंज खत्म हुई वहां इन्फिनिटी. ठीक है, एक पोटेंशियल बॉक्स या पढ़ेंगे, पोटेंशियल बॉक्स में भी इन्फिनिटी पढ़ेंगे. क्वांटम मैकेनिक्स में कोई के कुछ स्टूडेंट यहाँ पे कोई है इस वक्त? पोटेंशियल बॉक्स में आप इन्फिनिटी कैसे डिफाइन करते हैं? पोटेंशियल बॉक्स नहीं पढ़ा हुआ. ये बॉक्स है, आपको वैसे मैंने बताया हुआ है, और इस बॉक्स की लिमिट है 0 से a तक. ठीक है, इसकी विड्थ है या 0 टू l है. ठीक है, तो इन्फिनिटी क्या होगी? इन्फिनिटी यानी माइनस इन्फिनिटी क्या होगी? क्योंकि इससे 0 से पीछे नहीं जा रहा, तो माइनस इन्फिनिटी 0 होगा और प्लस इन्फिनिटी जो है वो l होगा. तो इन्फिनिटी मीन कहीं सिर्फ इन्फिनिटी का मतलब, बहुत से लोग आपके जैसे पहले दिन कहते थे कि सम पीपल स्टेट दैट इन्फिनिटी मीन
नॉट मेजरेबल कुछ कहते थे, कुछ क्या कहते थे कि अनडिफाइन और बीटीसी, ये सारी मीनिंग गलत है। ये इस तरह के शॉर्ट क्वेश्चन पेपर में आ सकते हैं, ठीक है। इन्फिनिटी इज डिफाइंड एंड आपसे पेपर में ये पूछा जा सकता है कि साइन थीटा के रिजल्ट के लिए साइन थीटा की इन्फिनिटी कहां से कहां तक है? -1 से +1 तक। -1 से आप नीचे नहीं जा सकते। माइनस इन्फिनिटी क्या है? -1। और प्लस इन्फिनिटी क्या है? 1, मतलब उससे बाहर नहीं जा सकते। दैट इज द लिमिट उसके। तो इसी तरह जो इन्फिनिटी इज दी बाउंड्री, जहां जो भी बाउंड्री होती है वो दैट्स वाई अगर सम टाइम आप बुक्स में वैसे आमतौर पर जनरली -इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी सीरीज में फोरियर सीरीज में लिखा होता है, लेकिन बाद जगहों पे आपको -इन्फिनिटी की जगह -L +L लिखा होगा। उसकी वजह ये होगी कि ए ना अगर वो बॉक्स ऐसा है और यहाँ उसने 0 लिया है, यहाँ से -L +L लेंथ ली है, तो दैट विल बी डिफाइंड एज -L2। so this -L will be -infinity, +L will be a +infinity. You must remember that. Okay, it is clear. So infinity is doesn't mean the out of limit, ठीक है। तो आपके पास मिसाल के तौर पे एफ अल्फा दिया हुआ है, ठीक है। इस वेरिएबल को हमने कन्वर्ट, फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन इज कन्वर्टिंग वन वेरिएबल इनटू द अदर वेरिएबल। जैसे कि आप इन द केस ऑफ प्लीज, जैसे इनके केस आप जैसे मैग्नीफाइंग ग्लास होता है, एक चीज आपको किसी चीज में बहुत ब्रीक नजर आ रही है, आप दूसरे वेरिएबल में उसको इनहांस करके ज्यादा अच्छे तरीके से देखना चाह रहे हैं। जैसे असल में ये पार्टिकल फिजिक्स में बहुत ज्यादा यूज होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल पार्टिकल इलेक्ट्रॉन का जो साइज है वो 0 साइज कहलाता है, तो स्पेस में उसकी डिस्टॉर्शन मेजर करना मुमकिन नहीं होता, या हमें क्योंकि वो 0 है, अप्रोचिंग टू 0, चलो एग्जैक्ट 0 नहीं है, तो हम उस चीज को ज्यादा देखने के लिए क्या करते हैं, उसे मोमेंटम स्पेस में ट्रांसफर कर देते हैं। तो इन्फिनिटी मेन पर्पज ऑफ दी Fourier transformation is transform from one variable to another variable. So इसका है तरीका क्या, एओटा के मीन किसी स्पेस में कन्वर्ट कर रहे हैं, या बीटा कह लें, हम ज्यादातर उमूमन के कहते हैं, तो सॉरी इस के स्पेस पे कर रहे हैं, ठीक है। मैं यहाँ के स्पेस कह रहा हूँ, ठीक है। उमूमन हम इस तरीके से मोमेंटम पोजीशन से मोमेंटम में, मोमेंटम से पोजीशन में करते हैं। आपको पता है ये अल्फा के रिस्पेक्ट इंटीग्रेट हो रहा है, तो नया फंक्शन जो है वो के का फंक्शन होगा, जैसे मैंने पहले बताया, ठीक है। और सिमिलरली इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन, अगर आप एफ के से वापस जाना चाह रहे हैं एफ अल्फा में, तो देन एफ अल्फा विल बी हाँ अल्फा का, ये इसीलिए मैं राउंड ब्रैकेट मीन फंक्शन, यस यू आर राइट, ये फंक्शनल के का हुआ, ठीक है। तो आमतौर पे हम ये फंक्शनल ज्यादातर वो क्लासिकल मैकेनिक्स में यूज करते हैं, एक्शन, या आप पढ़ेंगे इन फ्यूचर अगर आप रिसर्च करते हो, डेंसिटी फंक्शनल थ्योरी एक बड़ी मशहूर थ्योरी है ये, वो आप मुख्तलिफ इंशाल्लाह रिसर्च में आओगे, कोई स्ट्रिंग थ्योरी में काम करेगा, कोई नॉन कम्यूटेटिव ज्योमेट्री में काम करेगा, कोई क्वांटम फील्ड थ्योरी में काम करेगा, तो कोई एक्सपेरिमेंटल फिजिक्स में काम करेगा। यहाँ अब मुझे पता है आप में से कई मुख्तलिफ फील्ड में जाएंगे, तो ऐसे क्वांटम फील्ड थ्योरी वगैरह में तो कभी लोग आते हैं, मैंने आज तक बहुत ही कम चेहरों में देखे हैं, ठीक है। हैं क्यों? क्वांटम फील्ड थ्योरी, मैथमेटिक्स, थ्योरेटिकल फिजिक्स लोगों को जरा मुश्किल लगती है, तो कब लोग आते हैं, ठीक है। एनीवे फैसल साहब वैसे ना थ्योरेटिकल फिजिक्स में ज्यादा स्टूडेंट्स लेते हैं। एफ अल्फा, और यहां से आएगा एफ के एक्सपोनेंशियल ऑफ एओटा, एक मिनट, अल्फा था, यहां भी अल्फा था, सॉरी मैंने गलत लिखा, ये ठीक कर लेना, ठीक है। ये अल्फा मल्टीप्लाई हो रहा है,
एक सेकंड में बताओ। ओके, मतलब अब ये के की रिस्पेक्ट इंटीग्रेशन है तो अल्फा आ गया, अल्फा फंक्शन होगा, फंक्शनल नहीं होगा, ठीक है, यहाँ वो होगा। अच्छा, ये मैंने कहा कि माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, इन डिफरेंट केसेस दिस विल बी लेंथ में बी L to minus L, in some cases that may be a minus L to plus L, some cases 0 to 2 pi, सर्कल के केस में 0 to 2 pi, ठीक है, ये 0 to minus L to L हो सकता है और 0 to 2 pi भी हो सकता है, ठीक है, और माइनस पाई टू प्लस पाई, यानी ये सारा कुछ उस पर डिपेंड करता है व्हाट इज योर लिमिट। इन्फिनिटी मतलब एक चीज की लिमिट माइनस इन्फिनिटी माइनस पाई टू प्लस पाई है, मतलब अगर लाइन में ऐसे है कोई चीज 0 घूम ऐसे आ रही है, माइनस पाई टू प्लस पाई है, मतलब वट एवर यूर infinity and plus infinity will be depend upon the your secondly summation will be comes twice in each term, it will come twice in each term. Okay, this will be repeated, mean if there is I, if these repeat and this will be repeated. Okay, but it will come once in each term. The main indices will become twice, mean it will be repeated 2 times in each term. If there are 3 times, if for example, please be silent. Okay, that always come twice in each term. Okay, if it may be because the result is independent, so it's possible that it may be missing in some terms. Okay, but whenever it will come, it will be come twice in each term. Okay, here n, there is summation on n, there is summation on k. Okay, okay, got it. Result will have same indices, no sorry, for dummy indices result will be independent. Result will be independent from dummy indices. In this case, result will be same. Result will have the same free indices.
result will have same free indices as used in every term. So result will be here free indices are Mn, here is MP, MP and MP. Okay, so result will be always these are greens are free indices. And these blues are so the blues will be a dummy index. Okay, and in last there is a no dummy index. Okay. Since result is independent from dummy indices, since result is independent from dummy indices, we know that. Okay, we have proved that in the case of the Fourier series. We have already discussed in the case of the Fourier series, dummy variable is always independent from the dummy variable or the dummy variable, that will be independent from the dummy variable. Similarly, the result of summation will be always independent from the dummy indices. Okay, yes. Since result is independent from a dummy indices, then what is the meaning? Therefore, these indices may be different for each term. Okay, because the result is independent. Since result is independent from a dummy indices, here I use the n. In this term I have used the n. In this term I have used the k and his known indices. So it may be a different for each term. So it is not necessary each term must have the same dummy indices. So each term may have a different dummy indices. Okay, because result is independent. Because if I get the result, for example, if I say the this is you say that you may say that this is let's suppose this is psi. Okay, if this is a result, okay, and but this will we have this is MP. So here is n or k or whatever, it will be not create any type of the problem. Okay, if this result is psi, if okay, so result will be again MP. Okay, because k will not play any role. Okay, because that is a dummy, and here is a known dummy indices. Okay, so result will be always independent from the dummy indices, whatever you have used. Okay, got it?
So result is different, but it may different for each term. But in this case, result is depending upon the free indices. So each term must have the same, then they may add in each other. Okay. In case of free indices, every free indices must be same in each term. Okay. Mean if MP is free indices, then in second term that must be a MP. In last term that must be a MP. I mean free indices must be the same in each term. Okay. Free indices must be same for each term as well as for result. So they will not differ. Okay, got it? So free indices must be same for each term as well as for result. Okay, in this case that is no condition. And the same condition, same because result is depend upon the result is free from the dummy indices, and they may be a different for each term. So it has no work. I mean, it has a work because there is a summation on that, but the symbols has no work. I mean, the symbols in each term may change whenever you are interested. So you may change the symbols of any indices. You may replace any free dummy indices with any other indices whenever you are interested. Okay. So dummy indices may replace with any other indices may replace with any other indices in any term. किसी भी term, ये नहीं है. If you are not interested to change this indices, but if you are interested to change this indices, you are free from, you are independent to do it. Okay. So dummy indices may replace with any other indices in any term. नहीं, actually we are discussing about the same thing. Okay, ये तो बात ठीक है. Okay, but this point is that the dummy indices will be different for each term. It may be a different. Mean here that is n, here is a k. But other thing is about you may replace dummy indices. Mean if you are interested to replace n with the p, l, m, x, I, n. Whenever you are interested to replace it, you may easily, you are free to replace this with any other indices. Okay. Okay. For example, you don't like m and p. Okay. You hate for these indices which are started from the m or p. Then you may are interested to replace. But for free indices, it is not so simple. It may also replace any time. Okay. Whenever you are interested, but you have to replace these indices in each term at the same time. You have to replace these free indices in each and every term. Okay. Or we have to replace
Replace for replace to free indices, we have to replace these indices to each term with same indices, including result. Mean if you are interested to replace free indices, you may replace it too, okay? But for free indices, you have to replace in each term too, okay? For example, if you are interested to rewrite the above term, okay, you may write this term in this way that, for example, you are interested to write RAB, okay? You may interested to replace M with A and P with the B. Then you have to replace every MP in each term, so that will be M will be replaced with A. The indices may replace with any term, okay? That may be replaced with the alpha, but it must be a same, okay? Alpha. The alpha B plus C A it must be always A, okay? Gamma T, oh sorry, B, okay? Gamma B plus A B. Means the free indices must be the same because result is depending upon that, okay? The same reason. Okay. So the last point okay, we know that if the indices comes once, then that will be a free indices. That is a unique in each term, then that will be a free indices. If that are coming twice in each term, then that will be a dummy. But if that is comes in a thrice or 3 times or 4 times or 5 times or 10 times, then what will be happen? If indices comes more than 2 times in any term, yes, then what will be happen? Yes. That is about the functions, okay, variable, वो तो एक function होता है, that I admit, x alpha sin alpha या x multiplied by sin x mean function of x, that's true. But if indices comes more than 2 times in any term, then yes, then it means कोई गैस कर सकता है? Anyone want to guess?
Free indices will be a single time. Okay, once, only once. Then okay, it is not possible any indices comes more than 2. If unfortunately it happens in your calculation, if you are doing some calculations and you get the some indices more than 2 and repeated 2 times more than, it means there is no wrong in mathematics, but there is something is bugged in your calculation. So cancel it and repeat your calculation. Okay. क्या मतलब गलती की एग्जाम्पल, यानी मैं कुछ गलत करूं, गलती हो नहीं, मैंने आई स्टेटेड इट इज नॉट पॉसिबल, ठीक है. Yes, it is possible only in the case if I am doing something wrong. Okay, okay. In every type of integration, in every type of calculation, whatever type of the equation, and this will become a 1, 0. It may be a 0 time that is known. This may come a 0 time, and this may come a 1 time, and this may come a 2 time. If it come 1 time, if it come 0 time, if that is a tension indices, we will explain it later. If it come 1 time, then that will be transformed like a vector. If that is coming 2 times, that will be a dummy. Okay? So result we will again go to the result. If some indices is that will be transformed, that indices will be must be transformed like a vector. Okay, and if indices comes thrice, 4 times or 5 times, then it means in any term. अगर किसी भी term में वैसे ही आ सकते हैं different indices, ठीक है. But if indices comes more than 2 times in any, we will do calculation. आपको example मिल जाएगी, ठीक है. When we do calculation will tell what is the vector, what is the scalar, and where are we doing the calculation. Never allow us to repeat any indices more than 2. If any indices are coming in 2 times in any book or any, if you have observed, you may look at the Google. Okay? If then it means that professor did something wrong. Okay, in calculation. Okay. So, do again. Then your calculation is wrong. Do again. Okay. So, repeat it. Dummy, MP is free, AB is free, alpha and gamma is dummy. Yes, dummy indices लगा. Yes. Okay, so this is X may be result of A cross B cross C. You are right. This X is maybe and that may be a L P B. Okay. So here A L and LL. So I'm P L L and PP are dummy. Okay, so that is possible. Okay, so I think it's very clear. So what is the meaning of this? Okay, it means if we take a dot product A and B,
if we are taking the dot product psi and phi, okay, you may write alpha, and we don't need to write, actually this is equal to summation alpha equal to 1 to n, but we don't need to write this because the summation will be automatic. अल्फा 2 टाइम है, okay, I'm got it, okay, 1 minute. This equal to this, yes, we have already proved, okay. For example, I say that this is psi and phi, and I'm multiplying with the psi alpha, for example, yes. So this will become psi alpha, and this is component, okay. So this is phi alpha and alpha. No, this, sorry, this is dot product. This comes twice. Okay, you are claiming that if in that case, what will be happen? It means your calculation is wrong. This indices on which the dummy indices are applying, that must be a different than the dummy. Means if you are applying here alpha, then you can't use the alpha here. You must use the this will be around, but you may use this, that is beta and beta, because you may replace the dummy indices in any time, but it must be a different from the free indices. You can't use the free indices as the dummy indices. Okay, so that must be like this. We will do the calculations in the next. Okay, our all courses based, our next all lectures are based on the tensors, and we will do all calculation on these. Okay, so that is not possible. That is wrong. Your choice was wrong. Okay. In the case of, you have to choose the dummy indices in such a way that must be a different from the free indices. If you are using the alpha here, then you must use the gamma here, okay, or other. Okay, so okay, and dummy indices must be a different than free indices. That will not mix up with the dummy indices. Okay. So always be careful about that. So what about the length of the vector? If you take the length of any vector, magnitude of, we know that is equal to this, and that must be a there is a summation. So this result will be a, this is free. Okay. Yes, sir. Alpha is dummy indices, and the result will be free from the dummy indices. That's why. So.
So result will be always independent from the length. Whenever vector will be transformed, okay, its length must remain invariant. But the indices free things, all indices free. Actually, what is that? All indices free quantities are will be remain invariant under all type of transformation. Okay, and invariant means not change. Okay, that will remain the same after transformation. What is the meaning of invariant? Yes. वो change. Yes, yes. That will be not changed under any type of transformation. Okay. It means vector length. Vector is the quantity. So it's according to this formula. Vector is the quantity which remain invariant. Which magnitude remain invariant under all type of transformation. Even if the translation is translational transformation, whether that is translational transformation, whether that is a rotational transformation, that will be remain the same. The component will be same, transform in the same way that they will remain the. Okay, got it? So, no, that is about the as I have already explained. For example, x, y, z. If you are there are two type of transformation may be occur. For example, if this psi is making angle theta with this axis, okay. If it transform into here, or you may say that transform in this way, not straight line, but they may be a okay, and yes, origin change. Okay, this transformation will be a translational transformation. If they may be a 4-dimension. Okay. At this moment, I have taken only the 3 axis, y and z axis. They may be a there may be a 4-dimension too. So this is true for every case. For example, this is x, this is y, this is a z, x dash, y dash, z dash. This was O region and this was O prime. Okay. Recording, Ori? Okay. So. Now this psi was making angle theta with the y-axis. Okay, so this will be a psi bar and this will angle theta. Okay, got it? Now this. What happened? Number 1, under translational transformation, psi will remain psi, means psi bar will be equal to psi. Okay.
Yes, under rotation, psi will not equal to psi bar. The vector will be changed. Okay, is that vector will change, nevertheless, its components will transform in such a way, the component will be transformed in such a way that its magnitude will remain the same. Okay, so under rotation, the vector will follow this symmetry, that it will be transformed, its component will be transformed in such a way that its magnitude will remain the same as we have stated here. Oh, so if we join 1 and 2 points, if I join these two points, okay, if I join these 1 and 2, what is saying that 1 and if I join the 2, under all type of transformation, in this transformation magnitude also same, because this implies that psi 1 bar square is equal to psi. Because magnitude is same. If the vector is same, then magnitude will be the same. There is no, this is a straight order, okay? But if under the rotation, the magnitude remain the same. If we join these two things, it means under all type of transformation, the length of vector will remain invariant. Okay? So from 1 and 2, joining 1, 2, under rotation as well as translational transformation, magnitude or length of vector will remain same. Got it? So if you combine these two terms, okay. So here is, I have applied, this is not, this is the translational transformation O to O. So we have applied the transformation, there was a two type of transformation. One is rotation and one is, rotation that is depending upon the theta, and second is A. So transformation, these there are two type of transformation. One is rotation and one is a translation transformation. This is a rotation and this is a translation. That's okay. Simple. Got it? Yes, exercise. Find the expression
for rotation of vector in xy plane. Okay. Find the expression for rotation of vector in xy plane. Okay.